Today we have with us Mr. Yamini Bhushan Pandey, the Managing Director of IIML-EIC. Hello Mr. Yamini, thank you for coming to TICE TV. तो यामिनी जी, हम लोग शुरू करते हैं ये जानने से, बहुत बेसिक क्वेश्चन से, कि एक इंक्यूबेशन सेंटर होता क्या है, वो फंक्शन कैसे करता है, वो किन के साथ काम करता है? राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर स्वाति जी। देखिए, एक इंक्यूबेटर, अगर हम लिटरल मीनिंग की तरफ जाएं तो इंक्यूबेटर सिंपली मीन्स टू नर्चर समथिंग। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट स्टार्टअप्स, इट सिंपली मीन्स if a startup is getting some kind of hand holding or support from a business incubator, this simply means end-to-end support in terms of capacity building, in terms of funding, in terms of mentoring, and array of services and support that a startup gets from the kind of services which an incubator provides. So it's nothing but nurturing a startup. यामिनी जी, आजकल की जो यूथ है, दे आर वेरी आइडिया ड्रिवन। उनके पास में बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज होते हैं। तो डू यू थिंक एन इनोवेटिव आइडिया अलोन कैन मेक अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल? No, that's not absolutely correct. What happens is, if you are trying to run a conventional business and categorizing into an enterprise, एक जो conventional business होता है जिसका एक proven business model already है, अगर आप किसी बिजनेस का फ्रेंचाइजी ले रहे हैं या कोचिंग सेटअप कर रहे हैं या स्कूल सेटअप कर रहे हैं, तो वहां पर सक्सेस रेट बहुत हाई होगा, क्योंकि उस तरह के सिमिलर बिजनेसेस ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, यू कैन रेप्लिकेट द मॉडल, बिजनेस मॉडल। लेकिन जब कोई इनोवेशन लेके आता है तो उसमें बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि उसके बिजनेस मॉडल्स अभी पूरी तरीके से टेस्टिफाइड नहीं है। तो जब किसी के पास एक इनोवेशन आता है, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं स्टार्टअप को भी बोलना चाहूंगा, हाउ टू इंश्योर कि वो इनोवेशन को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आईपीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर वो कोई प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी है, उसका पेटेंट फाइल्ड है कि नहीं, या उसका वो उस तरह का प्रोसेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वंस यू आर थ्रू दैट आईपीआर प्रोसेस, देन यू हैव टू इंश्योर वेदर योर इनोवेशन इज कॉमर्शियली वायबल और नॉट। अगर वो कॉमर्शियली वायबल है, ऑफ कोर्स बिजनेस इंक्यूबेटर्स हेल्प दीज idea stage startups in terms of verifying and validating the ideas कि वो successful होंगे या नहीं होंगे, but at the same time even a person who is having an idea need to validate it and ensure कि वो commercially viable है कि नहीं। अगर वो commercially viable है तभी उस आइडिया को हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। सिर्फ इनोवेशन लेकर यू कैन नॉट क्रिएट अ बिजनेस कंप्लीटली। आजकल हम लोग बहुत सारे रियलिटी शोज में देखते हैं कि टियर 3 सिटीज या बहुत विलेजेस से भी लोग आते हैं जिनके पास में बहुत से यूनिक आइडियाज होते हैं, बट दे डू नॉट हैव द नेसेसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, या उन्होंने कभी इस तरह के इंस्टीट्यूट्स को देखा ही नहीं है कि जहाँ पे आपको नर्चर किया जाए, आपके आइडियाज को, स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में बताया जाए। तो क्या आपने कभी ऐसे लोगों के साथ में डील किया है जिनके पास में आइडियाज है, बट दे डू नॉट हैव दैट knowledge, that leverage of that benefit of the qualifications? बिल्कुल किया है। So we need to understand, रियलिटी शोज जब से आए हैं तब से सोसाइटी ने स्टार्टअप्स के बारे में ज्यादा जानना शुरू कर दिया। But for established business incubators like us, we have been doing all this work in terms of investment, in terms of pitching, demo days since 2016 or maybe before that as well. देखिए, कोई भी स्टार्टअप फाउंडर के पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होता है उसके आइडिया को कॉमर्शलाइज करने के लिए। सो वी ऑलवेज एडवाइज देम कि अगर कोई फाउंडर है जिसको लगता है कि वो सेल्स और मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, then he or she must always try and explore a co-founder which is good in technology, so that the product can be integrated with technology, or if it is a tech product, then possibly advancing the product technology for its commercialization. Similarly, अगर कोई टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट है या प्रोफेशनल है working in an IT company having an idea, he or she must always try and explore a co-founder which is very good in the area of business. तो ये जो कॉम्बिनेशन है टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस का, अगर ये एक साथ आ जाए with the help of 2 co-founders, 3 co-founders, or maybe 4 co-founders, then definitely the success rate of startup would always be doubled. सक्सेस का इंपॉर्टेंस तो सबको पता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सक्सीड फास्ट फॉर अ बिजनेसमैन।
क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फेलिंग फास्ट? जैसे अगर आपका बिजनेस मॉडल नहीं काम कर रहा है, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फेल फास्ट. आपको ये रियलाइज होना बहुत जरूरी है कि आपका बिजनेस नहीं काम कर रहा है, यू हैव टू स्टॉप हियर. तो वो आप उसके बारे में आप कुछ बताइए. देखिए, so we keep on interacting startup founders on a daily basis, more than 5 to 7 such startups on a daily basis. So we need to understand कि startup are already a risky affair. अगर आप overall research data उठाएंगे, out of 180 startups fail. Now the point is कि जो startups fail हो रहे हैं, इनके founders क्या करें या कैसे proceed करें in terms of their career or vision to the startup. So first of all, you need to understand that if somebody is having any idea, then it's very important to validate your idea at a very early level. Yes. And this can be done with the help of organizations like IIML-EIC and few others which are already prominently working and supporting the ecosystem. So we need to understand, it's a very basic example that I give to students and aspiring entrepreneurs, that creating a search engine is a single page code, right? And anybody and everybody can do it, but nobody can become Google search engine, right? There is only one Google search engine, and it's only because of the kind of strategy and execution that they are doing, and not just creating a product. Similar thing happens with a startup. अगर उसका validation हम early stage पे कर लें in terms of the overall business model of the startup, then it's always easier and a very smooth part for any startup founder to either proceed or drop with the startup. This is first part. Second part, if a startup founder has run a failed startup, you will be surprised to know that the corporates are very keen to employ and bring on board such startup founders who have failed such startups and learned something out of it. LinkedIn पे एक बहुत ही common आजकल एक requirement है that a candidate need to have an entrepreneurial mindset. It simply means कि उसने किसी एक ऐसे स्टार्टअप के साथ या तो काम किया है या खुद वो स्टार्टअप चलाया है जो पॉसिबली सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ, but the kind of mindset through which a candidate should come should be innovative enough, should be agile enough, right? Should be possibly coachable enough in terms of driving the overall organization in a more efficient and smoother manner. So both ways, if a startup is able to validate its idea through these programs, he or she should plan accordingly. If a startup fails, still I think the credibility and the requirement of such failed startup founders is huge in corporate world also. So both ways, it's a win-win situation for a startup founder. So Yamini ji, according to you, like if you have to select one thing, what is more important, ideation or execution? Execution is more important, and that execution is directly dependent upon the kind of co-founders you have on board. So that's why I said initially that very first factor which is very much important for any startup success is the co-founding team. बहुत सारे स्टार्टअप्स का फोकस जो है बाद में सिर्फ वैल्यूएशन पे आके रुक जाता है, बट उनका बिजनेस फिर बहुत ड्रास्टिकली फेल कर जाता है. True. तो ऐसे स्टार्टअप्स को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि व्हाट शुड दे फोकस ऑन? शुड दे फोकस ऑन वैल्यूएशन और शुड दे फोकस ऑन द कोर बिजनेस आइडियाज? A startup should understand the concept of valuation for sure, but should never focus and rely on valuation, because valuation is nothing but a bubble, I would say. If you talk about the methods that we use for valuing any startup today, there are more than 10 such established formulas for which we can derive to a valuation of a startup. From an investor's point of view, it is relevant enough to understand the concept of valuation. लेकिन startup founder के perspective से I would say valuation is one part which you should be aware of, but the other two areas which you need to continuously focus upon is how easily and prominently you are maintaining the cash flows for the startup. This is one. Second is what kind of value you are bringing on the table to the society. If you are able to cater these two specific areas, valuation तो कम ज़्यादा चलता रहता है, but definitely in that case your valuation would always increase down the line.
So your focus should be more in terms of keeping your cash flows intact and the value that you are adding to the society. एक दूसरे तरह के भी स्टार्टअप्स होते हैं यामिनी जी, जो हम लोग देखते हैं कि who are incurring heavy losses. बहुत heavy losses वो incur कर रहे हैं, बट फिर भी उनका मार्केटिंग स्पेंड बहुत ज्यादा है जी. तो ऐसे स्टार्टअप्स को आप क्या एडवाइस करेंगे कि उनको कैसे इस चीज को बैलेंस करना चाहिए? शुड दे फोकस ऑन मार्केटिंग स्पेंड, शुड दे फोकस ऑन देयर वैल्यूएशन, और शुड दे फोकस ऑन क्रिएटिंग बिल्डिंग द क्रेडिबिलिटी अमंग्स देयर टारगेट ऑडियंस? So we need to understand that any startup should not just focus upon positive or negative valuation first. They should ensure that how much funds or cash flows they have in terms of the runway that they have in terms of running their operation, in terms of maintaining and hiring new team members, and also in terms of technology research and advancement if they are working on something which is into core technology. अगर वो इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं and they are continuously able to maintain their cash flows intact and they always have a runway of, let's say, 18 months through their revenue sources or with the help of external funding, then they are on a right track. If they are continuously bleeding, their valuation is decreasing, they are raising funds on a devalued numbers, then there is a red flag and they should always sit and possibly recalculate the kind of work and strategies they are working upon. आई थिंक यामिनी जी, इससे हमें बहुत ज़्यादा इंसाइट मिलता है कि एक स्टार्टअप अगर ऐसे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट के अंदर में अगर इंक्यूबेट होता है तो वो उसको कितना बेनिफिट्स मिलता है, उसको कितना एडवांटेज मिलता है. सो इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू यामिनी जी. थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो.